Hi friends, so here we are with another travel video, and this time we are headed to Gulmarg. Yes, you heard it right. So we've taken a flight from Delhi to Srinagar, and this was during March 2020, first week of March, just before the pandemic and the lockdown, that took over the world. We were very excited to visit Gulmarg, especially after the abrogation of Article 370. So let's see what Gulmarg has stored in for us. Oh my god, just look at those mesmerizing views. So we have landed at Srinagar and pandemic का time था, so initial checking वगैरह होने के बाद we were able to come out. So we are taking a prepaid taxi from Srinagar airport to Gulmarg, which is costing us around 2,500 rupees. Here we are headed now on our road trip to Gulmarg. So as we were crossing through the road, we could see army personnel standing at every intervals. So we are not supposed to take video of them, so I couldn't record it. But we felt pretty safe, and the driver and the localites, everybody is so welcoming, and they all want people all across from India to come here and boost the tourism, and really friendly people, and we felt really welcoming and pretty safe here. So we are going to take a pit stop now at a place called Raja Dhaba. It's a vegetarian dhaba basically. So we had roti, and to mention, we had a local curry which is basically made out of lotus stem. So अभी पेट पूजा हो गई है, so we are back on the roads. So friends, before you take the hilly road to गुलमर्ग के फूट हिल में जो टाउन है वहाँ पे गमबुट्स रेंट करने पड़ते हैं, which is basically 200 rupees per person, and which you can return while you are going back. And you also have to check how is the weather up there and whether the roads are open if for the regular kind of vehicles. Otherwise they have special vehicles in which the tires are basically chained and which can go over the snow. So check that before you climb up. Amazing views, guys. I mean, we were not expecting a snowfall, but lucky us, we are we are witnessing our first snowfall, and it's freezing cold, but we are just loving it. Amazing views. And as you can see, these are the snow cutters, and they continuously keep cleaning the road and paving the way for us. So we are now headed to a hotel, Pine Spring Resort, and so that's the plan. So just look at this view. This is so cute and so beautiful. So let me give you a quick tour of our room. So yeah, this is a pretty cozy room. We have an electric blanket over here and a heater as well. Let me quickly take you to the balcony. Oh my god, that is so mesmerizing. Just look at this, guys. So it was almost 4 p.m. by the time we reached our hotel, so we were pretty tired. So we just went down for some quick snacks, went outside the hotel, played in snow, did some quick photo shoots and all. And yeah, here we are, just enjoying this view and calling it a day. So see you tomorrow, guys, with our day 2 itinerary. A very good morning, folks, and welcome to day 2 of Gulmarg. As you can see, this is the morning view. It has been snowing throughout the night, and it is still snowing, in fact. And you can see there the vehicles are all covered in snow, and the road, I think, is also completely covered with snow. So looks for a very interesting day ahead. So it's 10 a.m. in the morning and we are done with our breakfast और अभी हम अपने गाइड के लिए वेट कर रहे हैं. सो दोस्तों, मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ. सो व्हाट वी डिड वाज, कल हमने अपने ड्राइवर के साथ बात करके वी एक्चुअली मेड अ अरेंजमेंट फॉर अ गाइड. मंजूर नाम है उनका. एंड सो वो हमसे बेसिकली ये गाइड जो होते हैं एक दिन के लिए दे टेक 1,000 to 1,200 रुपीज़ फॉर द डे. एंड वो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं गुलमर्ग में देखने के लिए वो आपको गाइड करेंगे एंड दे विल टेक यू थ्रू. So we're waiting for a guide, and he'll take us to the gondola ride, which is just like 5 to 10 minutes walk away distance from our hotel. So let's see how it goes.
सो अभी हम निकल पड़े हैं गंडोला राइड के लिए। सामने माय हस्बैंड इज़ वॉकिंग अलोंग विथ आवर गाइड मंजूर। सो रोड काफ़ी स्लिपरी है बिकॉज इट हैज़ बीन स्नोइंग ऑल थ्रू द नाइट। सो थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है एंड वी वेयरिंग आवर गम बूट्स, so that is quite helpful. So make sure that you have your gum boots rented, or or you have it on your own. And yeah, as you can see, this is the gondola ride. So we are headed to the ticket counter, the base station. Yeah, that's our guide मंजूर भैया, and all thanks to him हमारा दिन काफ़ी eventful था. He was very helpful and a very friendly guy. We have shared his number below in the description box. And guys, please make sure कि आप अच्छा winter clothing including your headgear, gloves and your shoes, make sure you carry proper warm clothes when you're traveling to Gulmarg, especially during this winter and the snow times. Yeah. सो ये बेस स्टेशन है, यहाँ से आपको टिकट्स करने पड़ते हैं. एंड एज यू कैन सी देयर आर सम फोक्स हु आर रेगुलर स्कीइंग फोक्स, दे हैव देयर ओन gears, their attire, and everything, so they take it up along with them. And for people like us, like amateurs and tourists, so we can explore those things, I think, once we go up over there. So very excited while we are getting ready to get seated in the gondola. Just to tell you folks that you won't believe that this gondola ride is basically the second highest in the world. So the phase 1 लगभग 10,000 feet में है, and phase 2 is at 14,000 feet. Guys, just सोचिए, वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट. एंड यहाँ पे जैसे गाइड भैया लोकलाइट्स सब कोई बोलते हैं कि अपना स्विट्ज़रलैंड इधर इच है. सो दैट्स द टैगलाइन. कोई यूरोप या जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्विट्ज़रलैंड डेफिनेटली यहाँ पे. एंड कश्मीर इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल. इट इज़ ट्रूली द जन्नत ऑफ इंडिया. ये जो बीच में आप हट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली शेपर्ड हट्स बोलते हैं इनको. एंड ऑटम और स्प्रिंग में जब यहाँ पे कम्प्लीटली हरियाली होती है तो यहाँ पे फार्मर्स अपने बीच में दे स्टॉप ओवर एंड रेस्टिंग वगैरह करते हैं इन्हीं हट्स में. तो दोस्तों, अभी हम फ़ेज़ 1 पहुंच चुके हैं. एंड अभी जो आप देख रहे हैं, फ़ेज़ 1 में ही कम्प्लीटली स्नो भरा पड़ा है. सो इसीलिए लोग आगे फ़ेज़ 2 को नहीं जा रहे हैं. लेकिन अगर आप ऑटम या स्प्रिंग में आते हैं और फ़ेज़ 1 में तब स्नो नहीं होता है, तो लोग फ़ेज़ 2 को जाते हैं आगे, विच इज़ एट 14,000 फीट. वहाँ पे फिर उनको स्नो देखने को मिलता है. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, ये जगह बहुत ही सुंदर है. एंड मैं जितना भी बोलूँ, वर्ड्स विल फॉल शॉर्ट ऑफ दैट. definitely do visit this place. Gulmarg, just add it to your bucket list. It's a must do, folks. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, स्लेज राइड हो गया, स्नो बाइकिंग और स्नो साइकिलिंग. यू कैन डू अ लॉट ऑफ दीज एक्टिविटीज़. सो यहाँ पे यूजुअली जो आपका गाइड होते हैं, ही विल बार्गेन ऑन योर बिहाफ. दैट्स व्हाट हैपेंड विथ अस. दोस्तों, हमने डिसाइड किया दैट वील गो फॉर स्कीइंग फर्स्ट. एंड सो आर मंजूर भैया, उन्होंने हमें हेल्प किया. एंड वी नेगोशिएटेड फॉर 2,000 रुपीज़ पर हेड एंड फॉर अनलिमिटेड टाइम, विच वी रियलाइज्ड इज़ यूजलेस फॉर पीपल लाइक अस, लाइक टूरिस्ट एंड एमेचर्स, बिकॉज आप आधा पौना घंटा करके ही बहुत हालत ख़राब हो जाती है स्कीइंग करके. तो so friends, if you're actually interested in learning skiing, so you can plan for a day. And there is also a training institute over here. A lot of people from India come and they actually take skiing lessons. And that is, if something that you're interested, you can actually plan that accordingly. एंड अभी हो गया हमारा स्कीइंग राइड, मतलब जो अमेचर वाला स्कीइंग राइड, बट काफ़ी इट वाज अ लॉट ऑफ फन. And so yeah, and now we are headed a little up ahead. आगे जाके यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे वी आर गोइंग फॉर अ क्विक स्नैक्स एंड सम टी कॉफ़ी, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है.
It's freezing cold over here. So we had some Maggie and Maggie तो बनता ही है ये वेदर में ऊपर ऐसे पहाड़ में स्नो क्लैडेड माउंटेन में अगर आप बैठे हो एंड सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा चाय और खाना खाने के बाद. सो अभी वी आर जस्ट गोइंग अहेड एंड एक्सप्लोरिंग द प्लेस एंड काफ़ी स्नो भरा पड़ा है. सो वी आर नॉट एबल टू सी मच ऑफ द थिंग्स ओवर हियर. So there's also a mosque over here and we can just see the tip of it as you can see. And yeah, and then थोड़ी स्नो मस्ती अभी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. This is our cute little snowman that we built and yeah, and a lot of snow fun that went on over here as you can see. You know that really quenched our thirst to see snowfall, play with snow. I mean, we are just in a snow wonderland, folks. Do come over here, especially during winters, or at least come during March to experience this amazing place. So अभी दोस्तों it's almost lunch time. We came here in the morning and it's almost 1, I think it's 1 or 2 p.m. now. तो अभी नीचे जाना है हमें बिकॉज़ हमें और थोड़े साइट्स जो भी टू डू है यहाँ पे गुलमर्ग में वो भी देखना है. सो वी आर हेडिंग डाउन. सो आप नीचे जाने के लिए आप गंडोला से भी नीचे जा सकते हैं जैसे हम आए थे, या तो आप स्लेज राइड से आप नीचे जा सकते हो. सो वी थॉट लेट्स ट्राई द स्लेज राइड. सो मैं और मेरे हस्बैंड, सो हियर इट इज़. तो अभी हम नीचे आ गए हैं एंड वी हैव कम टू महाराजा पैलेस. सो दिस इज़ बेसिकली द रॉयल पैलेस ऑफ किंग रणबीर सिंह ऑफ कश्मीर and I'm sure it must have been very beautiful during its time. And then the next spot that our guide brought us to was the famous church point, but as you can see यहाँ पे completely snow है तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी गुलमर्ग में काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे बॉबी मूवी, जब तक है जहाँ, हाईवे, ये जवानी ये दीवानी, हैदर. सो अ लॉट ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर, बट बिकॉज ऑफ heavy snowfall and we are not able to go to those sites because we basically can't see anything. Also friends, so यहाँ पे गुलमर्ग में currently the first edition of Khelo India Winter Games is being hosted. It's a 5-day event and today is the first day of the event. So we went around and there was this cute little cafe and we had a much needed coffee and hot chocolate because of the freezing weather. And yeah, like I said, we couldn't see much of the sights, but it was just amazing the day that we had, especially up in the mountains when we went in the gondola ride. So guys, yeah, this is the end of day 2. See you tomorrow. Hi friends, so today is day 3 and we are checking out of our hotel in Gulmarg and we are headed towards Srinagar. And as you can see, it has been snowing all over the night, so the vehicles are not able to come till the hotel, so we are walking till the main road with our luggages. And you can see a lot of tourists and also a lot of sports fraternity people have come due to the winter sports that's going on over here. So yeah, so we are headed to the main road now. So दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जैम लगा है, काफ़ी स्नो हो गया है, सो रोड ब्लॉक हो गया है.
एंड अभी हम यहाँ से एक गाड़ी में जा रहे हैं, नीचे एक टाउन है गुलमर्ग के नीचे, फिर वहाँ से हम टैक्सी से श्रीनगर जाएंगे। तो बेसिकली ये जो व्हीकल्स है यहाँ पे पहिए में चेन बंधा हुआ है सो दैट इट डजंट स्लाइड ओवर द स्नो. So yeah, so there's a heavy traffic and I think a lot of folks are just about to, leaving Gulmarg. So yeah, we are stuck here in snow traffic. Hi friends, as we are leaving Gulmarg, all I can say is I haven't got enough of this place. I'll definitely come back again to Gulmarg, and all I can say is just pack your bags and come over here to witness the beautiful and splendid Kashmir. I mean, it's there in our very own country, and Kashmir Jannat hai dosto. So just come over here.